Good afternoon, everyone. इसमें नेट चलेगा? See, if the question comes regarding the factors on the ocean current, any question comes on the factors of the ocean currents, just remember that you mention the factors that originate the ocean currents, you mention the factors that modify the ocean currents. Is the voice clear? What are the factors that originate the ocean currents? Are winds, rotation of the earth, etc., etc. What are the factors that modify the ocean current? Is the configuration of the coast. Configuration of the coast as well as the ओशन बॉटम रिलीफ, ये दो फैक्टर्स है मॉडिफाई द ओशन करंट. और तीसरा फैक्टर हमेशा लिखना जो बुक्स में नहीं है, दैट इज द एकमैन्स ट्रांसपोर्ट. गेटिंग इट? दैट इज द ओशन करंट्स विल ऑलवेज मूव परपेंडिकुलर टू द wind direction. That is the Ekman transport. Quickly revising, what is the Ekman transport? Ki there is a wind is putting some pressure on the, some friction on the water. वाटर पे फ्रिक्शन कौन से डेप्थ तक? 100 मीटर तक, कोई भी वाटर के ऊपर, नॉट जस्ट ऑन द सी वाटर, कोई भी वाटर पे 100 मीटर्स तक देयर विल बी इम्पैक्ट ऑफ द वाटर विंड्स ड्यू टू फ्रिक्शन. अब ड्यू टू फ्रिक्शन द विंड्स विल ड्रैग द ओशन करंट्स, ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशन करंट्स, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट विल बी ऑन द टॉप लेयर. एंड देयरफॉर if the wind is moving to the right hand side, the ocean current will start moving to the right side of the wind, because हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के परपेंडिकुलर होता है कोरियोलिस फोर्स. सो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण विंड ऐसे, विंड इज पुटिंग सम फ्रिक्शन ऑन द वाटर एंड देयरफॉर कोरियोलिस फोर्स उसके लिए, उस ओशन करंट के लिए इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स. सो ओशन करंट ऐसे निकला 45 डिग्रीज में. बट अनलाइक द लेयर्स ऑफ द एयर, लेयर्स ऑफ द वाटर इज डिफरेंट because the changes in the properties of the matter, and इसीलिए the subsequent layers में as the density increases, friction decreases, and therefore they will start deflecting to the right of each and every ocean current. The only difference is deflection will keep on decreasing क्योंकि speed decreases, and therefore पूरा जो ocean water है वो somewhere between 90 to 70 degrees move करेगा. Ekman कहता है exactly 90 degrees, but real life में it is 70 degrees. That is what is the Ekman transport. Ekman transport results into western intensification. मतलब कुछ नहीं है, the generation of the counter equatorial currents, generation of the equatorial currents which will take the water perpendicular to the direction of the trade winds, and we have the equatorial current. Both the equatorial current will converge at the western coast of the oceans, not the continents. Eastern coast of the continents है, western coast of the oceans. That is what we will call as western intensification. Getting it? And ultimately उसके कारण there will be counter equatorial current and north and south currents. That is the north मतलब Gulf Stream etc., warm currents and cold currents. Once the warm water from here goes down, there will be thermohaline circulation of the cold water which will also start. Surface water move करेगा, there will be thermohaline circulation of the cold water which will also start. Fine. And then this thermohaline circulation of the cold water will come down, and at some places it will upwell. So when it upwells, it brings nutrients
and dissolved oxygen to the surface. As it brings dissolved oxygen to the surface, therefore there is a more growth of phytoplanktons. अगर कहाँ पे होंगे phytoplanktons? जहाँ पे there is continental shelf. But even if there is no continental shelf, as compared to the other regions, ज़्यादा oxygen है तो ज़्यादा fishes. You have to just understand कि inside the water it is very different like air. एयर में कहीं पे भी ऑक्सीजन इज इन द सेम अमाउंट, वाटर में ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट डेप्थ्स बिकॉज इट डज नॉट एग्जैक्टली मिक्स. अगर हम कहते हैं कि 72% इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वाटर के अंदर इट इज लेस, वाटर के अंदर इट इज समवेयर अराउंड 21 to 22%. गेटिंग इट? सो दिस इज द रीजन. द सेकेंड रीजन इज कहाँ हो सकता है और upwelling and downwelling. How the dissolved oxygen goes below the ocean water, this is due to downwelling. इसलिए downwelling are the regions of good fishing zones? नहीं. Fishing कहाँ पे करते हैं हम? We do it on the surface. When the downwelling occurs, oxygen goes below and therefore these are not good for fishing. Thirdly, why the regions of the mixing of warm and cold ocean currents are the best regions? Now her doubt was yesterday that the regions of mixing of warm and cold ocean currents पे downwelling होती है. Then we say downwelling is not good for fishing. How then it is the good fishing zone? Because if this is our imaginary continent, यहाँ से the warm current is coming, warm current is going upwards. In this regions, continental shelf अगर है या नहीं है, in this region tropics है. Tropics में biodiversity is greater. Because of this, biodiversity in the ocean is greater. Algae, phytoplanktons, all the green aquatic plants is greater. Therefore, this region is rich in nutrients. This region is rich in fishes. This region is rich in organic matter. This region is rich in oxygen. So, ये सारा ocean current कहाँ लेके जाएगा? उसके साथ साथ it will take here. Then, when the cold ocean currents come here, it will bring clean water. Fine, it will bring dense water. Denser है water, so obviously oxygen भी is more easily available. For example, when we say that in the entire troposphere oxygen is 72%, fine, but Mount Everest पे ऊपर जाते ही oxygen mask लगता है. Why? Because density decreases and therefore you have to take more air inside to take in the oxygen. Getting it? So you see here that as it is coming with the cold dense water, it is bringing more oxygen यहाँ से, more phytoplanktons यहाँ से, plus continental shelf, and therefore Grand Banks region is the rich fishing region of the world, the richest fishing region of the world. Getting is? Downwelling होने दो मत होने दो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. Fine? और prelims के questions जो मैंने पूछा था आपको, downwelling याद रखना, it will remove the nutrients, bad for fishing. Upwelling, will it bring? See, this was the question. The regions of upwelling are good for fishes because one brings bottom dwelling organisms, 2 brings nutrients to the surface, 3 brings dissolved oxygen to the surface. Select correct option. A, 1 and 2 only. B, 1 and 3 only. C, 2 and 3 only. D, 1, 2 and 3. C. And nutrients को लाएगा, oxygen को लाएगा, it will not bring the minerals to the surface. Getting it? Clear? So छोटी छोटी चीजें we'll have to remember. Clear with this?
Now the next topic we are going to do is the layers of ocean water. Fine. So you can take this map along with me when I do the layers of the ocean water or ocean habitats या कुछ भी इसको कहते हैं या the oceanic zones of the world. So we can know that, can I say the oceanic zones or the layers of the ocean water can be divided into two: coastal habitats and oceanic habitats. There are two: coastal habitats and the oceanic habitats. Oceanic habitats are further divided into pelagic and benthic. कल मैंने आपको बताया था what is benthic, the deepest part, and that is the floor of the ocean. And what is pelagic, उसके ऊपर का region. अभी तक हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे देखे हैं, सबसे क्या पूछा है? तो दे हैव आस्क्ड ओनली पेलाजिक, दे हैव नॉट गॉन टू द बेंथिक, और वैसे पूछेंगे भी नहीं बेंथिक, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज प्रेजेंट इन द बेंथिक जोन्स. Recently there was a question, कभी तक नहीं आया था, but recently there was a question on the coastal habitat. But coastal habitat means what? Nothing but lagoons, mangroves, estuaries and corals. So recently they had asked you to compare between the coral coast and the mangrove coastline. What is the difference between the coastline in the coral regions and the mangrove coastline? The pelagic biome is further divided into neritic and oceanic. If you remember yesterday, I told you what is neritic. Littoral zone जो है, littoral zone का आगे का part, that is known as neritic. You will understand now what is neritic. Pelagic मतलब जो पानी के नीचे है. So out of that there is a neritic region and the oceanic region. Neritic region is the region which is very, very shallow. Oceanic region is the region which is very deep. And the oceanic province is further divided into epipelagic, mesopelagic, bathypelagic and so on. I will not. Yes. Pelagic biome, you saw yesterday's lecture. Pelagic biome is the biome which is present over the oceanic crust. Littoral biome is the biome which is mostly a part of continent. Pelagic biome is the biome which is mostly a part of ocean, nothing else, and therefore distance may vary. So we have drawn, I had showed that in the yesterday's diagram. Bathypelagic, फिर hypopelagic, फिर abyssal pelagic. कोई don't worry, bathypelagic को further divide करते हैं हम. And benthic, can I continue?
benthic biome matlab the biome which is present at the ocean bottom. Ab this bottom can be bottom of deep sea or the bottom of continental margins. Bottom of the continental margins. What do you mean by the bottom of continental margins? Continental shelf के नीचे का, slope के नीचे का, या the bottom at the continental rise. Deep sea bottom means abyssal plain का bottom, oceanic trenches का bottom. So you can now understand once, because once I have divided, क्यों बाकी के questions नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं बाकी के part में. Everything is on the pelagic, and therefore 6 to 7 times the pelagic questions have been asked, but there is no question on the other because they will not ask. फिर in the recent years जब UPSC is making our subject tough, they are asking you one question on the coastal habitats. That is, what is the difference between the mangrove coast and the coral coast? Cold coral coast. Cold corals होते हैं, cold coral coast नहीं होता कभी. Cold corals have, and I'll teach the corals. Am I doing the corals right now? And I had taught you cold corals in GS last year. What are the cold corals? Deep sea corals. They are the corals which do not live in the colonies. Fine, they are found on the deep seas. So the coastal habitats in this fine. Sometimes they ask you the question regarding the layers of oceans. Sometimes they ask you regarding the biomes. जब तक biomes और layers of ocean पे आता है question ये है, ocean deposits का question ये नहीं. Ocean deposits slightly different answer है as compared to the layers of the oceans. Ocean deposit is given very very properly in Savindra Singh, very nicely in Savindra Singh. The only difference is उस पूरे chapter को you should make it in one page, because bar that things are being repeated. So you just have to make that entire chapter in one page, but it is very properly given. In which book of Savindra Singh? In the physical geography of Savindra Singh. And coincidentally, yeah, I don't know why, if you buy oceanography of Savindra Singh, उसमें से ocean deposit is गायब है, but it is present in the physical geography of Savindra Singh. So वो chapter भी करना, but पहले अपने notes, right? And this is not given in that, obviously that book of the Savindra Singh, that is the ocean habitats. Neritic photic zone or photic zone, depending upon the depth. यही हम अभी लिखेंगे, what are the differences. Bathy, B-A-T-H-Y, pelagic. Low energy coast is mangrove coast. And the difference of the question was difference between the low energy coast and the coral coast, not directly mangrove coast. But is mangrove protecting us from tsunamis, cyclones? Why? Because it reduces the energy or speed. That is why it is known as an low energy coast. सोचना था. अगर कंसेप्ट पता है कि मैनग्रोव्स में स्पीड ऑफ द वेव्स, टाइड्स, विंड्स, एवरेथ्रा डिक्रीजेस, तो फिर यू नो व्हाट इज अ लो एनर्जी कोस्ट. अगर नहीं वहां पे याद आया, डर गए क्वेश्चन देख के, तो आंसर नहीं लिख सकते. फिर बच्चों ने क्या किया? कंडीशंस फॉर कोरल रीफ्स. आपको क्या था? कंडीशंस फॉर मैनग्रोव कोस्ट एंड कंडीशंस फॉर कोरल रीफ कोस्ट कंपेयर करना. हाँ, मतलब जिनको पता नहीं लो एनर्जी कोस्ट, जिन्होंने दिमाग चलाया वो चल गया दिमाग वहां पर. वैसे दिया है ये बुक में, कि एक बुक में दिया है, बट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बुक्स आर यू गोइंग टू रीड? राइट, हाउ मेनी बुक्स आर यू गोइंग टू रीड?
So take down. Point number 1, ocean habitats and marine biomes. Ocean habitat and marine biome. Account for about 2/3 of the total areas, about 2/3 of the total areas of all terrestrial, of all terrestrial, of all terrestrial and oceanic habitats, oceanic habitats of the world. Do this part which we are doing very properly for your environment ecology also, GS में ये जो हम कर रहे हैं. फाइन, सिर्फ आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में से फैक्ट्स याद रखना है, यहाँ पे प्रॉपरली सब स्टेटमेंट्स भी याद रखना है. सेकंड पॉइंट, द ओशन प्रोवाइड्स, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पे कितना परसेंट है ओशियन हैबिटेट, ओशनिक बायोम 2/3, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल बायोम इज 1/3. सो कल अगर क्वेश्चन आता है प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम इज ग्रेटर और ओशनिक हैबिटेट इज ग्रेटर, ओशनिक हैबिटेट बाय द sheer size, getting it, by the sheer size. और इसके अंदर, इस ओशन हैबिटेट के अंदर फिर कोरल्स, विरल्स एक्सेट्रा भी आएंगे. गेटिंग इट? नेक्स्ट पॉइंट, the oceans provide habitats for marine plants. In the bracket, what are marine plants known as? Phytoplanktons. Marine plants, phytoplanktons. And marine animals, bracket में zooplanktons, zooplanktons, comma nekton community, nekton community. What is nekton community? जो स्विम करते हैं. नेक्टॉन कम्युनिटी मतलब फिशेस जो स्विम कर सकती है, नथिंग एल्स. नेक्टॉन कम्युनिटी, कॉमा बेंथिक कम्युनिटी, एक्सेट्रा, जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, नेरेटिक कम्युनिटी, नेरेटिक कम्युनिटी, बेंथिक कम्युनिटी एक्सेट्रा. बेंथिक मतलब देखो जो सरफेस पे रहते हैं नेरेटिक, हमें लिखने की जरूरत नहीं. जू प्लैंक्टन्स, छोटे छोटे एनिमल्स. जो एकदम बॉटम पे रहते हैं बेंथिक, जो बीच में रहते हैं नेक्टॉन. कभी नीचे गया, कभी ऊपर आया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर आया, एंड कभी मतलब फॉर एग्जांपल शार्प, कभी इट गोज डाउन, इट कम्स अप, एक्सेट्रा. फाइन. नेक्स्ट, so today, yesterday one of the biggest jokes happened. Dr. Chaitanya, my friend, मैं उसको घर लेके गया. He's a doctor also and he is also managing here everything. मेरा फिजियोथेरेपी वाला आया घर पे, उससे फिजियोथेरेपी चल रही थी, चैतन्य देख रहा था. फिजियोथेरेपिस्ट होने के बाद चैतन्य ने उसको पूछा, आर यू अ फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपरली? बोलते नहीं सर, मैं डिग्री नहीं एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ. तो ओके ओके. वो जाने के बाद बोला, इसलिए तो ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरा तेरे पे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है. वही 1-1.5 महीने से ही इज स्ट्रेचिंग मी, बट स्ट्रेचिंग के बाद जो रिलैक्सेशन देना है वो नहीं कर रहा है. फिर मेरी गर्दन ले रहा है, ऐसे कर रहा है और ऐसे कर रहा है. फिर मेरी पीठ ले रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है. तो
मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं बॉम्बे जाता हूँ 2 दिन में ठीक होके आता हूँ और दिल्ली में 1 महीने से फिजियोथेरेपी चल रही है, तो क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ? तो दैट इज द रीजन। आज से बंद कर दूंगा। तो हाँ मतलब अभी से, मतलब आज से ही, जब वो आएगा तब से उसको कहा कि आज मैं नहीं आने वाला हूँ। So obviously for us who don't have medical knowledge, we don't know the exercises. But he is telling me कि extension तो कर रहा है, extension के बाद there has to be relaxation. For example, you do dumbbells में ऐसे extension and you do contraction, तो फिर मसल्स रिलैक्स होंगे। तो मेरा सिर्फ पैर ऐसे ऐसे खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, और फिर मेरे को पूछ रहा है कि नस खींच रही है? मैं बोला हाँ खींच रही है, अच्छा लग रहा है तब, जब तक वो करता है, तो उसके बाद ठीक ही नहीं हो रहा है। सो दैट इज द रीजन आई वाज नॉट, wrong line of treatment is next point. Next point, classification of ocean habitats into coastal and classification of ocean habitats. Take it in the points only. Into coastal and oceanic habitats. Classification of ocean habitats are into coastal and oceanic habitats. Into coastal and oceanic habitats. Coastal habitats, next point, are in the form of lagoons, estuaries, and wetlands. हमें अभी ये नहीं करना है, lagoons, estuaries and wetlands. But can you tell me what is the difference between lagoon and estuary? Simple GS में. What is lagoon? What is estuary? What is a wetland? What? Not necessarily. तो क्या होता है? Lagoon and estuary can be both wetlands. Wetland is any zone where there is a presence of water or moisture. If there is a coastal wetland, uska depth at the low tide should not exceed 6 meters. Fine? That is what is a wetland. कहीं पे भी जो पानी है. अब पानी जो है, it can be when the river का mouth has submerged below the sea, it is estuary. और पानी can be when some lake is near the coast but separated from the sea by a narrow land. That is what is known as lagoon. Lagoon means a lake that is separated from the main water body, that is the sea, by a narrow landmass. For example, Lake Chilika, it is separated from the Bay of Bengal by a narrow landmasses, or Pulicat Lake, etc. Getting it? Next. Estuary is nothing but the mouth delta which has got submerged below the sea. अच्छा, क्या हो रहा है? ये तो ये लाइट्स एक्स्ट्रा तो नहीं चल रही? नहीं, रहने दीजिए. And then there are oceanic habitats, and we'll start with the oceanic habitats. सबसे पहले pelagic habitat. बहुत properly करना pelagic biome. You can see with the importance how many time it has been asked.
oceanic habitats, the oceanic habitats the oceanic habitats can be divided on the basis of can be divided on the basis of environmental conditions of the sea, environmental conditions of the sea, comma, location, location and biomes, and biomes. सेम एज इट इज ये पॉइंट है चैप्टर 5 में भी, ठीक है. ये क्वेश्चन आ सकता है एज अ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो इन पेपर 1. इट इज एज इट इज प्रेजेंट इन सिलेबस में चैप्टर 5, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, on the basis of location, environmental conditions and biomes into pelagic and benthic biomes, into pelagic and benthic biomes. Similarly, on the basis of sunlight, it is classified into photic or euphotic. आपको पता है up to 200 meters. Dysphotic, 200 meters to 1000 meters. Aphotic, beyond 1000 meters. Obviously इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा. जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, the zone of light euphotic or photic, the zone of dispersed sunlight, so dysphotic. Dysphotic does not means no sunlight, dispersed light is therefore dysphotic, and aphotic means no light, the dark zone which is below the thermocline halocline layer. Getting it? Next, चॉइस इज योर्स, कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, या यूज ही नहीं करना है, दिस इंफॉर्मेशन. बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाई आई गेव यू. फाइन, ये जीएस में ज्यादा काम आएगा, नॉट इन ऑप्शनल. गेटिंग इट? नेक्स्ट इज pelagic habitats and biomes. Pelagic habitats and biomes occurs the entire region of oceans and seas, of the oceans and seas from generally from shelf break. You already know what is shelf break, जहाँ से continental shelf break होता है. That is why Savindra Singh has 2 different depths, क्योंकि continental shelf का depth will be different from the shelf break.